Hello friends, welcome to Gyanstation and this is CA Dipti Jain, आपके दोस्त और host. लेकर आई हूँ a very special guest CA Akshat Jain with us, जो कि हमारे भारत में कहिए कि in India there are 130 million people और उनमें से कुछ 100 people are there in this India जो कि इस पोजीशन इस मुकाम पर पहुंच पाते हैं. So why not to have, so I thought, why not to shoot a video with such an eminent personality, ki what are his secrets, discipline, strategies and attitude towards CA examination, which made him to reach here. So Akshat, welcome you all here. And we also have the parent of Akshat Jain, CA Ashok Jain and Meenu Jain with us. उनसे भी हम बहुत जल्दी पूछेंगे कि what they have nurtured and how they brought up their kid, कि they have reached up to this level. First of all, heartiest congratulations, Akshat, for securing this position. Thank you. And making all of us proud. Thank you. Thank you. So first, I would like to know what strategy you followed in the first 5 months, last 6-7 months of the CA final examination. Strategy that I follow and I recommend is ki you should start your classes on time. I would suggest 1.5 years before your CA final attempt, you should have started either of the subjects, preferably a practical subject like FR or SFM, and your classes should be done before 6 months prior to the your attempt. So my attempt was in May, and by October, mid-November, my classes were done, so that I could focus on self-study after that. And in self-study, I would target 12-13 hours. That was my strategy. I wanted to ensure that I don't burn out in these 5-6 months, and that consistency is like maintained throughout the study leave. So you completed your syllabus before 6 months of the examination? Yes, my tuition I completed 5-6 months before the examination, which is what I recommend. That means a one-time syllabus you have gone through 6 months before. No. Only the lectures I've watched. Okay. So that is done. Now I can focus on the portion myself. I can go through the books, the content myself now. Because in CA final, managing your lectures with your articleship is one of the most challenging tasks. Lectures are pretty huge. The lectures which I had taken for FR from one of the faculties was 400 hours long. So to manage that is very critical in CA final. The last 2 years have gone in pandemic. So how you manage most of your lectures, whether they were online or offline? Online, through lectures. Live mode, a pen drive or Google Drive. These modes only, because offline classes weren't allowed at that time. I would prefer pen drive because you can watch it at your own pace. My articleship used to be hectic. I've done my articleship from a Big Four, and those timelines, because your Big Four articleship at times the day ends at 11 p.m. So a pen drive or a recorded Google Drive, it just makes it more flexible, which is why I had opted for the pen drive option. But as the months progressed, I had taken a combination of live and recorded. Basically, for one subject like direct tax, I was watching live lectures in the morning 7 to 10, and then after my articleship day would be over, I would watch pen drive or Google Drive. The strategy in last 1 month, and how many revisions you have done? Explain it like I went through the entire subject myself once. I studied it myself, and then uske baad I did 2 revisions more. Okay, and the strategy during the last 1 month was that I was focusing on my second revision. I had given on an average 3 days per subject, because there was I was running on a very tight schedule. It was very cut to cut. I couldn't afford more than 3 days, or I couldn't even revise for the third time. So 3 days per subject, I think you should target that, because ultimately 1 day before the exam you'll just get like 1.5 days. So 3 days is still comparatively easier. So you learned it loud, like you practiced for 3 days revising one subject, so that you can accommodate that 1.5 day, Yes. just day before the examination. Yes.
So, what special strategy you followed in that 1.5 days which we get? So, whether you have emphasized on the complete revision, all the important topics, how you scanned that complete syllabus in this short duration? See, Because this is the main problem which our students face. The syllabus is so vast, and how to they have studied everything, and then to revise it on the day of examination is really a mess. yeah. I know that feeling. In those 1.5 days, I think because of shortage of time, you should, like, time is a limited factor. We learn that in costing. Here, time is a limited factor. So we should go for the ABC analysis. I would recommend that. Of course, it's not foolproof, but it's one of the better methods to tackle the shortage of time. Focus on the bigger topics and complete the particular chapter. Don't just do two sections from it, because ICI can ask you from anywhere, and hence and in our attempt, many questions, most of the questions in audit law, DT is always like that. These weren't repeated questions, so these were tested on new concepts. Hence, you should complete one entire chapter and you should start with the more important chapters, I would say. And avoided that peer pressure or a competition which we Mm. have with our peers, and they keep telling ki I have completed so and so syllabus, and then you feel yourself to be lost ki you have not done anything. So this happens with each student who is going through this examination. So Yeah. how you handle that? See, I believe in quality, so I tend to take more time than some of my peers, most of my peers. When they say that they can complete a topic in say 3 hours, I would probably take 5 6 hours. Okay, but I have that self belief. I know that C isn't easy for anyone who 3 घंटे में कर लेगा. इसका मतलब ये नहीं कि उसके लिए भी easy है. And there's something about quality. I do believe in quality, and because of that self belief, it's worked in previous years, also previous examinations, that helped me. And plus comparisons, I've never believed in comparing myself with someone else. There's one quote by Virat Kohli where he says that in every net session he tries to be better than the Virat Kohli of yesterday, instead of Great. comparing himself with someone else. Yes. So I would suggest that to avoid peer pressure, if if you scored say 14 audit in this exam, in this particular attempt or whatever, you should try to aim for 55 and 60 in the next attempt. Compare yourself with yourself, not with someone else, because ultimately सी आप खुद ही बनोगे. किसी को 450 आ गया, आपको 420 आ गया, तो भी आप दोनों सी बनोगे. Great. Wonderful words. Self belief is the key to success. That's Yes. what the thing says. And you learn this self belief in a very early age of 22. And I hope this 22 is really lucky for you, because you completed the CA at this such a young age of 22. Yes. And how to avoid the social media distraction nowadays? Social So much social media distraction. How you handle that? social media distraction. I was off Instagram for more than 1 year before the exam, and as far as, like, I just think that because you have to prioritize now, and I knew that there are many people wasting the time on Instagram. So I knew that if I want to achieve something, I'll have to sacrifice in this aspect. Instagram was not there. WhatsApp and Telegram I had to maintain because a lot of important communications from classes and regarding the course used to come on those particular channels. Many doubts used to get resolved through those channels. But I had given my phone up to my mom. Like, my main phone was, it was still working, but I'd given it up to my mom. And then in the night, I would just check it for some time. And throughout the day, I would use a dabba phone. So that is why I avoided even WhatsApp का distraction, because I think that आप एक doubt या एक group खोलने जाओगे for a doubt, तो you'll end up wasting time on 9 more groups. Exactly. And hence all unimportant groups जो भी थे वो मैंने study leave चालू हुई तभी मैंने leave कर दिए थे. That's Yes. a very nice technique to use that
old phone where only numbers you can click and you cannot type, use WhatsApp or any other software app. Yeah, It's really definitely. nice. Yes. In both Yeah. the exams, you use the dabba phone only. So Inter it's a yeah, it's a great tip for all our CA aspiring students that avoid social media, avoid WhatsApp, and for that you don't have to struggle much. Just give your phones to your parent. Now this is very, very, very difficult for But for to be honest, it's very difficult to give up your main yes, phone right now because classes are online, everything's happening online, all communications are happening online. And hence, I right, would suggest that check it when you're least productive. Like मेरे रात के hours like 12 बजे जब मैं सोता था, उसके बाद 10-15 मिनट मैं चेक कर लेता था फोन. ठीक है, क्योंकि वो lesser productive है comparatively. तो वो टाइम मेरा यूज होएगा. That is very important to see. so what motivates you the most and what helped you to stay motivated throughout this journey of CA? See, it's very tough to have that level of positivity throughout these 5-6 months. It's very tough because every morning you have to do the grind and it doesn't stop there. It has to be for the next day, and then that efficiency cannot reduce. At least, of course, we're humans, it does happen, but you need to make sure कि यार आपके 5-6 months में आपके जो targets है वो achieve हो रहा है. So that is why to motivate myself, I had written a few motivational quotes on the wall, जो जिधर मैं पढ़ता था स्टडी टेबल उसके सामने ही, ठीक है. Then of course your parents are there to get that smile on their face, and that is another motivational factor. Number three, you can also visualize what everyone's reaction will be, what amount of happiness or success you'll achieve when you clear C examinations, and you can visualize that. And there's a lot of positive synergy regarding that. So these are few of the techniques I had used. Okay. And you just mentioned you decide upon the target. What happens if that target is not achieved? That 3-4 days target you set for a particular subject, and if it's not achieved, then how you handle that? As I told you, I'm a slow learner, so I would say on 80% of the days my targets weren't achieved. So what you do in that case is that again self belief kicks in. I wouldn't say that you compromise on your sleep and all. I used to maintain a 7.5 hour kind of sleep in my study leave. But you need to still chart down a plan on paper कि अगर मेरा shoot up भी हो रहा है 4 दिन के जगह थोड़ा और टाइम लग रहा है because I'm focusing more on quality and I'm covering content, more content. तो कितने से shoot up हो रहा है, अगर और टाइम लग गया तो will I be able to complete the designated number of revisions. ये आपको पेपर पे देख लेना चाहिए एक बार. What's your favorite motivational quote? As you Okay. told that you have written few of them in front of your table. So what's your favorite one? That's on that's on my ये एक एस्पिरेंट्स करके शो है, उसमें से एक लाइन है टुवर्ड द एंड, वो मैंने दीवार पे लगा रखी थी. इट गोज लाइक दे मौका जिंदगी इम्तिहानों से ना हम डरे. So that I had put it on the wall. Great. Wonderful. Anything else you want to add upon to the aspiring chartered accountants? Yes, in terms of strategy and revisions, just ensure that your classes are done by the right amount of time. Even if even if your friends are doing 3 revisions, 4 revisions, I think 2 revisions are sufficient. 2 revisions means after the first time you've studied, uske baad 2 revisions. Give at least one test of each of the subjects. That will help you in writing practice, time management. That will build your confidence. Even if you achieve in the first test that I had written, I had secured 45 marks on 100 in IDT. But I knew that I can do better. At not even once did I get demotivated or I got nervous or I started crying after the 45. I just laughed it out and I saw the suggested answer जो दिया हुआ था and I just compared. तो वो कर लेना चाहिए. You should always look at your processes instead of the result.
ठीक है, रिजल्ट पे फोकस करोगे कि मुझे रैंक चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो प्रेशर बहुत आएगा. आई डोंट थिंक दैट वर्क्स. यू फोकस ऑन द प्रोसेसेस, यू फोकस ऑन व्हाट इज कंट्रोलेबल. ठीक है, राइट। बहुत चीजें अपने कंट्रोल के बाहर होती. पेपर टफ आ गया तो आप क्या करोगे? इससे अच्छा आप अपने प्रोसेसेस पे ध्यान दो. रोज आप 12 घंटे मेंटेन करो. ठीक है, सैक्रिफाइस करनी है तो वो करो, एंड यू विल गेट थ्रू. Wonderful, wonderful. And the routine which you follow, daily routine. Yes, I had a sleep cycle of 12 a.m. to 7 a.m. 7 a.m. को फिर मैं उठ जाता था, एंड 7 को सबसे पहले उठ के आई यूज्ड टू स्टार्ट स्टडिंग अ थियोरेटिकल सब्जेक्ट. Okay, because mornings are more productive for me and theory is something that I dread. ठीक है, थ्योरी में मुझे इतना वो एक्साइटमेंट नहीं होता है, तो इसलिए जो वही बोल रहा हूँ, सीए इज अबाउट सैक्रिफाइसेस. सो आई हैव टू सैक्रिफाइस माय मॉर्निंग्स फॉर डूइंग समथिंग दैट आई डोंट लाइक. एंड थ्योरी में देयर वाज ऑडिट लॉ, देयर वाज कॉस्टिंग में भी बहुत थ्योरी है. I used to study that for an hour, 1.5 hours. फिर breakfast खाता था, and then I would again start studying, which would go until 12 o'clock. Okay, so I've studied for a good 4 hours in the morning, at least 4.5 hours. उसके बाद I used to break for lunch. Half an hour lunch खा लिया मैंने 12:30 तक. उसके बाद 1 घंटा I would sleep so that again I get refreshed. ऐसा नहीं कि 4 साढ़े 4 घंटे वो भी थ्योरी पढ़ के यार रेस्ट ऑफ द डे मेरा ऐसे ही बहुत स्लीपी जा रहा है या बहुत टायर्ड हूँ मैं. सो इट वुड रीफिल माई सेल्फ विद एनर्जी. एंड देन आफ्टर 1:30 onwards, another 1.5 hours till 3 o'clock I would study theory. So I would do 2 subjects a day, one theory, one practical. तो 3 बजे, which is half of day, तक I would do theory. And then 3 बजे के बाद another 6 hours I would do practical. Of course, इसमें there would be many breaks, like evening snacks का आप 10-15 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, डिनर का half an hour. एंड आई वुड रिकमेंड कि आप रात में क्योंकि आपका लेसर प्रोडक्टिव आवर होता है. लाइक एटलीस्ट इफ इट्स समवन लाइक मी जिसका रात में इतनी पढ़ाई नहीं होती, तो आप रात में 1 घंटे का ब्रेक भी लेना चाहते हो तो आप ले. आई वुड सजेस्ट कि आप लो, ताकि आप 5-6 महीना Go for a रह walk. सकते हो. लाइक आई यूज्ड टू गो फॉर अ वॉक मरीन ड्राइव After में. dinner. Yes, after dinner, around 9-10ish, and I would listen to music. You can play a sport, you can talk to someone, you can talk to your family, whatever works for you. You can watch a show. वो सब आप कर सकते हो. मैं जो ब्रेक डेज होते थे तब मैं मूवीज देखता था. तो उससे क्या है, थोड़ा आपका माइंड लाइट होता है और आप फिर अगले दिन आप थोड़ा फोकस ज्यादा कर पाओगे. दैट. एंड व्हेन आई से मूवीज, पॉजिटिव काइंड ऑफ मूवीज. या हाँ, Motivation. उस समय मेरे एग्जाम के समय कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई थी, मुझे देखना था ये मतलब, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं कश्मीर फाइल्स देखूं और फिर सोचूं यार कि अभी मैं पढ़ने लग जाऊंगा. ऐसा नहीं. Okay. So this is how you overcome that boredom of CA studies. सी स्टडीज इट, आई वुड से दैट, देखो आप अगर 3 दिन मजे करोगे ना, तो चौथा दिन पढ़ना टफ होएगा, बिकॉज आप पिछले 3 दिन से आप मजे कर रहे हो. ठीक है, Right. लेकिन अगर आपने चौथा दिन जो एक ही दिन है आपने वो पढ़ लिया ना, तो पांचवें छठे दिन से वो आपकी लिंकिंग बैठ जाएगी एंड इट विल बी मच इजियर टू स्टडी. ठीक है, अगर मैं कल अच्छे से पढ़ा तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आज भी मैं अच्छे से पढ़ूंगा. ये मैंने नोटिस किया था. Right. तो दैट इज वाई बोर्डम फिर आपको बियॉन्ड द पॉइंट आपको मतलब याद ही नहीं रहेगा कि यार बोर्डम जैसी चीज भी होती है. इट विल जस्ट बिकम अ रूटीन. एंड कंसिडरिंग द अमाउंट ऑफ पोर्शन, अगर आपको बोर्डम होता है तो भी आप खुद ही बोलेंगे कि यार मैं इधर नहीं आ सकता, मैं उधर नहीं जा सकता, because you yourself are going through that portion and not someone else. And when your portions get completed, you feel more confident, and your interest towards studies increases. Definitely, you feel much more confident and you think that this time you can achieve something great, something you can create history, and that is मंजिल के करीब लगने लगता है तो ऑटोमेटिकली जोश बढ़ जाता है. हाँ, डेफिनेटली. जो भी आपकी कंट्रोल में होता है, आप उसमें अगर कुछ अचीव कर पाओ तो इट बूस्ट्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. एंड आपको बस वो सी फाइनल के लिए हर किसी को अभी बहुत एंजाइटी होती है, तो वो आपकी थोड़ी रिड्यूस होएगी. एंड अगर आपके टारगेट्स थोड़े भी मीट नहीं हो पाए, 70%, 75% भी अगर मीट हो जाते तो भी आई वुड से इट्स क्वाइट गुड. This is somebody I can say who is given a very honest
suggestion after clearing his CA final examination? Because I have heard lot of students after clearing their CA speaking that we have done 5 revisions, 7 revisions, and 8 revisions, and this actually don't help them out. They go in their coaching classes, they shout out loud, they boast themselves as a we have done 6 revisions, 7 revision, and this ultimately actually act as a demoting factor, because for a normal student carrying on articleship and of course there are some household responsibilities are there, and maintaining that EQ, IQ, everything, and it's very difficult. And that's what you have said very nicely. Go slow, go study, and complete and your portions, and do quality study. 2 or 3 revisions are enough. That's what we can conclude after speaking to Akshat. Yes, 2 revisions are quite good. Yes, wonderful, Akshat, wonderful. And definitely it's very helpful. And now coming on to the mom. Hi, Minu ma'am. How are you? Hi, yeah, I'm great. कैसा फील हो रहा है बेटे? Very happy. बहुत अच्छा लग रहा है. मतलब All last 22 years the struggle paid off. no words to express. Yes. Still can't believe on 15 July. Still can't believe. वो 5 मिनट तो we both of us cried so much जब उसने अपना रिजल्ट खोला. दोनों 5 मिनट को तो he also got emotional and I तो cried so much. For 5 minutes तो मैं रोती रही, continuously रोती रही, मतलब no words to express. That moment is so precious. So precious. और अभी मुझे ऐसा लगता है वो मोमेंट एकदम मालूम नहीं था ना ऐसे आने वाला है. मतलब तो आई कांट कैप्चर दैट मोमेंट जो उसके एक्सप्रेशंस थे अपना रिजल्ट खोलते हुए. अभी मुझे ऐसा लगता है कि काश मैंने वो मोमेंट कैप्चर कर पाई होती मैं, बट स्टिल उसके वो एक्सप्रेशंस मेरे माइंड में हमेशा के लिए रह गए हैं. मतलब वो जो उसने अपना जब रिजल्ट खोला when he saw his rank, वो मेरा 4th, तो वो मोमेंट उसका जो उसका फेस था, आई कैन स्टिल रिमेम्बर दैट. मतलब और शायद मैं पूरा लाइफ लॉन्ग वो मेरा उसका फेस मेरे को याद रहेगा उस समय का. Best memory of Yeah, life. yeah, still. How you nurtured, how nurturing the kid is very important. So ऐसे क्या संस्कार और values you have imparted to both of your kids? Both are brilliant. So what as a mom, what is your what you have to say? What I say, मतलब as he has said, ये अपने आप पे बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट है, बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट है, एंड ही इज अ वेरी डाउन टू अर्थ चाइल्ड. वेरी डाउन टू अर्थ. मतलब कभी इसने अपना कोई भी मतलब अचीवमेंट को बूस्ट नहीं किया, कभी भी कुछ. तो मेक हिम मतलब जैसे वो खुश रहे. मतलब मेरा एक ही वो रहता था थ्रू आउट द पीरियड की व्हाट ही इज, एंड ही इज अ वेरी मैच्योर चाइल्ड. वो कभी भी अननेसेसरी कुछ डिमांड नहीं करता है. तो मतलब बस वो खुश रहे, मेरे को बस वही अच्छा लगता था कि बिकॉज आई नो कि अगर वो खुश रहेगा तो ही कैन गिव हिज 100% बेस्ट. तो बस मेरा एक ही उस समय वो रहता था एम कि बस वो कैसे भी कुछ मेरे से कहीं पे मिस्टेक्स भी होती थी, कभी ऐसा नहीं है आई कैन डू मतलब. तो मतलब लेकिन मेरा एक ही रहता था उस समय कि बस कैसे भी वो खुश रहे तो एटलीस्ट ही कैन स्टडी. तो आई कैन से दैट ओनली कि मतलब मेक देम फील हैप्पी, मेक देम फील कॉन्फिडेंट, डोंट पुट टू मच प्रेशर. तो आई कैन थिंक दे कैन अचीव जो चाहे वो बच्चे हासिल कर सकते हैं. जैसा कहते हैं कि आप उनको बस सही एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर दीजिए, दैट ओनली, बाकी सब वो आगे कैरी कर लेंगे खुद से. दैट ओनली. तो एक कोशिश रहती थी, और बाकी तो ये लोग खुद भी अपना देते हैं 100% बेस्ट. ये भी चार्ट बना के हर सब्जेक्ट. इज ही ओबीडिएंट? क्या सर कुछ बोल रहे हैं, बोलिए सर. ये मीनू मतलब सी वाज टोटली डेडिकेटेड टू हिम, एंड पूरा चार्ट मतलब चार्ट भी बनाती थी पूरा हर सब्जेक्ट का. आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट सी नोज मच मोर देन दैट कौन सा सब्जेक्ट में क्या चैप्टर है और उसमें क्या क्या करना है. इफ यू सी हर चार्ट यू विल नो मदर कैन डू लाइक दैट, बिकॉज सी वाज आल्सो एकेडमिकली वेरी स्ट्रांग. तो मैं सीए में था पर सी वाज टेकिंग केयर ऑफ अक्षर. तो बहुत ही अच्छे ढंग से उसने किया. दैट वाज सुपर्ब.
very thankful to have. तो अक्षत इज अ ओबीडियंट चाइल्ड और थोड़ा अपना मन मर्जी टाइप्स? ही इज अ ओबीडियंट चाइल्ड, ही इज अ Okay. ओबीडियंट चाइल्ड, वेरी ओबीडियंट चाइल्ड। लेकिन वो अगर जैसे कुछ बात कहता भी है, जैसे समटाइम्स जरूरी नहीं है उसके और मेरे व्यूज हर चीज में मिले, लेकिन बट समटाइम्स इफ इज टेलिंग तो लाइक उसमें मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम वो अननेसेसरी कुछ डिमांड कर रहा है, मतलब Right. हाँ, ही इज लाइक मतलब हमेशा उसमें कोई मतलब सेंस जरूर रहता है, तो दैट्स व्हाई Understanding. हाँ अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज लाइक टू लिसन लिसन, मतलब मतलब क्योंकि उसका मतलब हमेशा जो वो उसका जो बिलीव रहता है, जो सब कुछ रहता है, वो शायद 99% करेक्ट जाता है। तो in that way I can say like at the age of 22 he's a very matured child. He's a very very matured child. मतलब sometimes मैं मतलब जब वो पढ़ता था तो sometimes मैं मतलब I should feel मतलब मैं लो हो जाती थी या कुछ हो जाता था तो वो उल्टा मुझे संभाल लेता था। एक्चुअली ये सारे एग्जाम्स जो होते हैं उसमें हाँ, बच्चों के साथ साथ पेरेंट को भी उतना प्रेशर रहता है. that एवरी only I am डे दे telling. हैव टू लिव विद देम विद दिस ऐसा प्रेशर. लगता था अपने एग्जाम्स चल रहे हैं, व्हेन द हाँ. रिजल्ट मैंने फ्रॉम द 2 days बिफोर आई, जब 15 को रिजल्ट आ रहा था तो मैं उसको बोल रही थी अक्षय तू रिजल्ट ही मत खोल, अपने को रिजल्ट देखना ही नहीं है। लाइक द पीरियड वाज वेरी बेस्ट, लाइक दोस 1.5 days का 1.5 month का पीरियड वाज वेरी गुड, दैट यू हैव क्लियर, दैट यू हैव गिवन योर एग्जाम्स, रिजल्ट भी नहीं आया, मजा करो चिल करो। मतलब वो 1.5 महीने का पीरियड आफ्टर गिविंग द एग्जाम्स एंड द रिजल्ट इज कमिंग, वो पीरियड बहुत अच्छा होता है कि मतलब पढ़ाई का प्रेशर भी नहीं, रिजल्ट एग्जाम दे दिया रिजल्ट नहीं आया, मतलब जब रिजल्ट आने लगता है वो 14th नाइट आई कांट से, मतलब क्या प्रेशर आता है पेरेंट्स पे भी, मतलब एकदम प्रेशर आई कांट से, लेकिन मतलब एक टेंशन तो रहता है 100%। मैं श्योर एंजाइटी थी, हाँ एंजाइटी एग्जैक्टली आ जाती 100%, है. 100% आई वॉज श्योर कि अक्षत क्लियर हो जाएगा। हाँ हाँ. ये मतलब कोई रिजल्ट आने से पहले मतलब पेरेंट्स का इतना श्योर होना, मतलब इन सीए एज यू आल्सो सीए, मतलब ये श्योर होना कि सीए आप क्लियर हो जाओगे इन फर्स्ट अटेम्प्ट, नोबडी कैन से। लेकिन इन दैट वे आई वाज 100% श्योर कि अक्षत क्लियर हो जाएगा, बट विथ सच अ गुड रैंक, ये मैंने कभी सोचा नहीं था, भगवान ने शायद बहुत जरूरत से ज्यादा दिया। तो उस ईश्वर का शुक्रिया करना ये वो चाहिए. तो मैं बोल रही हूँ, भगवान ने जरूरत से ज्यादा दे दिया, मतलब इतना तो मैंने सोचा नहीं था। He had worked really hard, Yeah, sincerely. definitely he has worked very hard. I have मैंने उसको देखा है And पूरा 4-5 महीने, पूरा मैंने साथ, मतलब मैं तो पूरा 4-5 महीना उसके साथ ही रही हूँ, तो आई हैव सीन थ्रू, मतलब काफी काफी उसने मेहनत की है। मुझे अक्षत से पूरे समय बात करते हुए जो सबसे बड़ी बात लगी है कि मेहनत तो सब बच्चे करते हैं. एवरी चाइल्ड वर्क्स वेरी हार्ड, बट सेल्फ बिलीफ में जाके कहीं ना कहीं चूक जाते हैं हम. Where That's we start losing our confidence by seeing others, by seeing our outside situations. तो एक सेल्फ बिलीफ, मैं सभी व्यूअर से कहना चाहूंगी कि एक सेल्फ बिलीफ, keep that till last moment, even if you are losing. and don't Then to compare with keep that others. self-belief. Don't compare with others. Yes. So every, as we say, every plant has its own growth. You cannot That's true. compare the growth of a tulsi or a rose plant or a bamboo tree or a cactus tree to each other. Everyone have their own pace, their own lifespan, and their own upbringing. So That's true. nobody should compare with others. And एक और बात बोलते हैं, जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसा तन, और जैसा तन वैसा संसार और सोच. तो what special care you took of, or as a mother, what special care you take at home of your kids, your family? Like regarding the food you are asking or what? Yeah, food and the food, yeah, basically. Yeah, like in the morning he used to have the basic जो अपना lunch रहता है, but in the evening he started taking very light dinner. क्योंकि जनरली क्या होता है, बच्चे 4-5 महीने बैठते हैं तो दे मतलब नो फिजिकल एक्टिविटी एंड Right. नथिंग ऑल, तो दे स्टार्ट गेनिंग वेट। तो इन द इवनिंग ही स्टार्ट टेकिंग वेरी लाइट डिनर लाइक सूप्स एंड सम लिटिल स्नैक्स एंड ऑल, मतलब ऐसा सब कुछ। तो यू वोंट बिलीव, मैंने उस पीरियड में काफी नए नए सूप्स ट्राई किए इसके लिए, मतलब काफी कुछ, मतलब कि भाई उसका मतलब जैसे ही मतलब वेट गेन नहीं करे, तो क्योंकि जब आप वेट गेन करते हो मतलब
सब करते हैं, नथिंग रॉन्ग इन दैट, लेकिन अगर आप एक थोड़ा फिजिकली भी आप रहते हो तो वो आप लेजीनेस वगैरह, मतलब वो जो एक लेथा वो सब आपको नहीं आती है। तो स्टार्ट टेकिंग सम मतलब लाइट डिनर्स, कभी कभी बीच में चीट डेज भी आते हैं, वी यूज टू गो आउट फॉर डिनर। मोस्टली ये और मैं दोनों बहुत डिनर्स के लिए बाहर गए हैं, मतलब यू वोंट बिलीव, बिफोर एग्जाम स्टार्ट होने के एक वीक पहले भी हम दोनों डिनर पे बाहर गए, मतलब बहुत जाते थे डिनर पे दोनों, ओनली ही एंड आई, दोनों बहुत जाते थे डिनर पे बाहर। एंड द मोस्ट क्लोजेस्ट हमारे लिए गरवारे रहता था, तो उसको टाइम वेस्ट नहीं कि भाई कहीं दूर जाके टाइम वेस्ट होगा आने जाने में, जर्नी में। तो हम लोग वी यूज टू गो वेरी क्लोज, हमारा गरवारे क्लब हम लोग को वेरी पास पड़ता था, तो लाइक मोस्टली वी यूज टू गो देयर एंड हैव डिनर। तो लाइक चलो वो ऐसा कैलकुलेशन करता था कि मैं घर पे भी खाना खाऊंगा तो मेरे को हाफ एन आवर 45 मिनट्स लगेगा, तो अगर बाहर जाऊंगा तो 1.5 आवर लग जाएगा, ओके आई एम वेस्टिंग ओनली हाफ एन आवर। तो लेकिन थोड़ा चेंज हो जाएगा, एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, थोड़ा फूड है, लाइक ही इज अ फूडी, तो तो थोड़ा इन दैट वे, और मतलब वी कैन डू लाइक दैट कि जो उनको पसंद है वो अपन थोड़ा बना दें खाने में। तो लाइक बिकॉज फूड इज अ लाइक फॉर देम, फूड इज ओनली लाइक एंटरटेनमेंट फॉर देम, कि अगर अच्छा खाना मिल जाए तो दे कैन स्टडी। तो लाइक व्हाट दे वांट वी कैन मेक फॉर देम टू ईट, लाइक इन दैट वे वी कैन मतलब खुश कर सकते हैं अपन लोग उनको जो अपन अपना अपनी तरफ से, वी कांट स्टडी विद देम, लेकिन जो अपन अपनी तरफ से कर सकते हैं वो कर दे। इनफैक्ट आई कैन अंडरस्टैंड कि आप दोनों ही वो सीए फाइनल के पूरे 5-6 मंथ्स के प्रोसेस में यू बोथ वेर टुगेदर, सो यू बोथ नीड अ चेंज ऑफ वाइब्रेशंस एंड एटमॉस्फेयर, दैट्स व्हाई यू बोथ गो आउट फॉर डिनर। बहुत जाते थे डिनर पे, यूज टू, एक बार तो एक शादी के रिसेप्शन पे इसने मुझे ज्यादा कैंसिल करवा दिया और खुद अपने साथ डिनर पे ले गया। ओके, वंडरफुल, सही है, नाइस नाइस, वेरी नाइस, एंड ऑल दिस मेमोरीज आर टू बी ट्रेजर्ड, ये लाइफ टाइम रहती है। वंडरफुल। और जो इसने कोट सब जगह लिख के रखा रखे थे, यूज टू स्टडी एट, मेरी मम्मी के घर पे भी ये पढ़ता था, तो वहां पे भी इसने अपने को मतलब पेपर्स पे खुद ने अपने हाथ से लिख लिख के कोट्स लगा रखे हैं सब जगह। यहाँ मेरे बेडरूम में भी, यूज टू स्टडी इन माय बेडरूम ओनली, तो सब जगह उसने जो लगा रखे हैं स्टिल दे आर देयर। तो मतलब वो सब हम लोग भी पढ़ते रहते थे पूरा दिन, तो अच्छा लगता है। सो वेरी नाइस। एंड अब मैं अशोक सर से पूछना चाहूंगी, बीइंग फादर, व्हाट गोल्डन एडवाइस यू गिव टू अक्षत? मेरी पहली बात तो थैंक्स दीप्ति फॉर ब्रिंगिंग अस ऑन दिस प्लेटफॉर्म, एंड आई नो योर टैलेंट दैट कैन बी सीन नाउ आल्सो। तो पहली बात तो हम वी आर ऑन द क्लाउड 9 फॉर लास्ट फ्यू डेज, बिकॉज इट इज बहुत ही जबरदस्त, इससे बड़ी खुशी हमारी जिंदगी में कुछ हो नहीं सकती। And as far as I also cleared in first attempt, so I know the value of this, and I have much more confidence in him than he has in himself. मतलब ये जैसे मीनू बोल रही थी कि इसको एक्सपेक्टेशन था ये रैंक और उसका, मैं हमेशा से ये सोचता था, बिकॉज आई हैव सीन हिम फ्रॉम बिगिनिंग, तो मेरे को लगता है ही इज आई मीन मेंट फॉर दिस, तो वो हमेशा से इसके ऊपर मेरे को कॉन्फिडेंस रहा ही है। और मैं आई वाज एमिंग, और मेरी भगवान में सबसे ज्यादा आस्था है, भगवान महावीर और सब में, तो मैं यही सोचता था भगवान इसको टॉप में ही लेके आना है, तो उस हिसाब से। और इसका जो चीजें जो सबसे इसमें यूनिक है वो आई कांट हैव एंड आई कांट सी इन मोस्ट ऑफ द पीपल, ये जो इसमें कामनेस है, ओह दिस इज अनपेरेलल, इतना अच्छे रंग से ये काम रहता है। मैं इसको एग्जाम में लेके जाता था, सब जो भी पेरेंट्स आते थे दे कुड जस्ट आई वाज मेरे को लगा सब मैं ही स्टार था वहां पे, सब मेरे से मिलते थे, और द वे ही कम्स आउट फ्रॉम द एग्जाम सेंटर, जो इसके चेहरे पे कामनेस रहती थी, बस मैं इससे ही पूछता था अक्षत कैसा हो पेपर, एंड ही विल जस्ट से अच्छा अच्छा, बस दैट टू वर्ड्स। जब वो घर में एंटर होता था ना, मैं उससे पूछती थी अक्षत पेपर कैसा हुआ, क्योंकि वो एक जब बच्चा घर में एंटर हो रहा है ना, उस समय उसके फेस पे जो एक्सप्रेशन होते हैं ना, उससे आपको समझ में आता है कि पेपर कैसा गया। तो वो एक एक्सप्रेशन देखने के लिए आई यूज टू वेट 3.5 hours, लाइक 2 to 5 पेपर है, तो अब मुझे मालूम है घर पे आते आते उसको 5:30 5:45 हो जाएगा, तो लाइक वो एक एक्सप्रेशन दरवाजे पे देखने के लिए आई यूज टू वेट। तो मैं उससे पूछती थी अक्षत पेपर कैसा हुआ, 40 आ जाएंगे, एक फिक्स आंसर उसका रहता था।
40 आ जाए. 40 आ जाएंगे. 40 is like the 40 is the passing marks na, you know. Yes, 40 yes, is the yes, I passing know. marks, you know. हाँ, 40 हाँ, out of हाँ. 100 is the passing mark. तो उसका एक फिक्स आंसर रहता था, 40 आ जाएंगे. मतलब इसके अलावा उसने कभी कुछ बोला ही नहीं. मैंने उसको हमेशा यही पूछा, मैंने कहा अक्षत सिर्फ 40 आएंगे. तो मेरे लिए तो मतलब जो वो Like बोलता two अ, 2 days before also तो बारिश हो रही थी, तो वो विंडो पे ऐसे वो फॉग जैसा हो जाता है ना, तो उसने अपने मार्क्स लिखे थे 400 out of 800. The okay. passing marks you need Right, 400 na, right, out of right, 800. right. So like we were laughing with him, Akshat at least इसको 401 कर देना. Okay. And now he got 606. Wonderful, 606. So अक्षत, इसी से मुझे एक चीज पूछने में आया आपसे कि how you manage that 3 hours of the paper? What strategy you followed in writing those 3 hours? 40 marks का पहले कर लेता हूँ, safe हो जाऊं. नहीं वैसा आई नेवर थिंक अबाउट कि यार 40 लाना है या 60 लाना है या 80 लाना है 90 लाना है, वैसा नहीं. एज आई सेड, आई फोकस ऑन प्रोसेसेस, गिव योर बेस्ट, ट्राई डूइंग व्हाट इज इन योर कंट्रोल. तो रीडिंग टाइम के समय एक तो आपका क्वेश्चन 1 मोस्ट पेपर्स के लिए यही होता है, इलेक्टिव को छोड़ के क्वेश्चन 1 आपका कंपलसरी रहता है, एंड क्वेश्चन 2 टू क्वेश्चन 6 में आपको क्वेश्चन 2 टू क्वेश्चन 6 में सिर्फ 4 करना होता है आउट ऑफ 5. ठीक है. So in the reading time I never went through question 1 because that is compulsory, वो तो करना ही उसमें. अभी read करके I would never waste time. My main motive was कि यार अपने को reading time में क्या अपन option में छोड़ रहे हैं वो अपने को assess करना है. I have to see कि कौन सा question सबसे easy है या मेरे लिए सबसे beneficial है जिसमें ज्यादा marks आ सकते हैं मुझे. ठीक है. तो question 2 to question 6 जो मैं देखता था 5, उसमें से 4 अटेम्प्ट करने होते थे. हर पेपर में ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन तो होते ही थे जो मुझे प्रॉपरली आते थे. तो आई वुड स्टार्ट माय राइटिंग आल्सो एज सून एज टाइम चालू होता था, मैं वो 2 क्वेश्चंस के साथ ही स्टार्ट करता था. ओके, बिकॉज एग्जामिनर पे भी अच्छा इंप्रेशन आता है उसका. एंड वो 2 क्वेश्चंस में मैं अच्छा टाइम लेता था, प्रेजेंटेशन अच्छी रखता था, अंडरलाइनिंग सब कुछ रखता था ताकि इट स्टार्ट्स विद अ गुड इंप्रेशन. एंड देन वंस 2 क्वेश्चंस आर डन आई वुड असेस कि बाकी के जो 3 क्वेश्चंस है इनमें से फाइनली मैं कौन सा छोड़ रहा हूँ, मैं वो उसको छोड़ देता था. आई वुड मेक दैट डिसीजन एंड देन आई वुड अकॉर्डिंगली डू दोज chosen questions plus question number 1 which is compulsory. And the objective is always to secure 3-3-4-4 marks. ऐसा आप डायरेक्टली 50-60 मार्क्स के लिए एम मत करो. जो क्वेश्चन पे आप हो, अगर 4 मार्क का क्वेश्चन है तो उसमें से ट्राई सिक्योरिंग 3 मार्क्स एंड ऑल. ऐसा आप लिख दो उसके लिए, ब्रेक इट डाउन. एंड ऑफ कोर्स गोज विदाउट सेइंग टाइम मैनेजमेंट के लिए यू शुड यूज अ 1.8 मिनट्स का स्ट्रैटेजी. क्या रहता है, 100 मार्क्स का पेपर रहता है, 3 घंटे 180 मिनट्स होते हैं, तो पर मार्क यू हैव 1.8 मिनट्स. तो मेरे दिमाग में वो इंस्टेंट कैलकुलेटर ये इंटर सीए के डे से कि 4 मार्क का है तो अराउंड 7 मिनट्स आई कैन स्पेंड, 5 मार्क है 9 मिनट स्पेंड कर सकता हूँ. तो यू शुड मेंटेन दैट कंसिस्टेंसी एंड वो टाइम आपको मालूम रहना चाहिए. मैं थ्योरी पेपर्स में भी मैं कैलकुलेटर लेकर जाता था टू कैलकुलेट टाइम. यार अगर मैंने 46 मार्क्स का मैंने अटेम्प्ट कर लिया तो 46 into 1.8 इतने मिनट्स आई कुड हैव स्पेंट वर्सेस व्हाट आई हैव एक्चुअली स्पेंट. ऐसा. It's a great tip for all the students. And now let's have some out of box questions from Akshat. Okay. Rapid fire round. Yeah. Okay. So all set. So you have Yes. to be very, very quick in answering those questions. Okay. Okay. So are you a night owl or early riser? Early riser. Early. Blue or red? Blue. Practice or job? Job. Whom you seek for advice for taking decisions? My inner mind, I hear everyone, I take my own decisions. Take your own decisions. Okay. So who all are in those circles? Are your parent or friends or your brother? Who all are there? Of course, they are advised and they are informed and the inputs are taken. Apart from that, some of my friends, I do ask them. And then if it's something related to professional life or educational life, then the concerned mentors are always there.
Who is little, mom or dad? Mom. Mom. Yeah. Okay. India or abroad? Both. Different And times. both. Okay. Yes. Different Depends on time. Sometime in India, sometime abroad. So, where you see yourself after 5 years? After 5 years, I think I should. My aim as of now is to complete an MBA in few years time. So I think by 5 years I should have completed an MBA. Yes. So, hanging out with friends or watching out movie at home with popcorns? Hanging out with friends. Your first crush? First crush, nobody, not yet. And your favorite subject? In CFR and FR, FR, GFRS. GFR is my elective. He got 92 in that. How much? 92. 92 in JFRS. Wow, superb. Yeah. And your favorite food? Subway. Yeah. Huh? Like Subway. Pardon? Subways. Subways. Okay. So next is group study or self-study? Self-study. Introvert or extrovert? Group study where others are just present, but ultimately मैं खुद से पढ़ रहा हूँ. ऐसा नहीं कि मैं साथ में हम लोग डिस्कस करके वो सब पढ़ रहे. It's fine if लाइब्रेरी में मैंने इंटर की पढ़ाई लाइब्रेरी से की, सब लोग रहते थे, बट अल्टीमेटली उधर भी आप सेल्फ स्टडी करते हो. यानी कि ये चैप्टर खुद से मतलब 2 लोग साथ में रिवाइज करेंगे, वैसा आई डोंट प्रेफर. Introvert or extrovert? What are you? Extrovert. Introvert. Extrovert. Extrovert. Yeah, extrovert. And daily, how many hours of study you prefer? 12-13 hours. 12 to 13 hours. And when your articleship is going on, at that time, how At many that time, hours? on weekdays, because your articleship is there, you should aim for 3-4 hours. Okay, great, Akshat. Wonderful. एक्चुअली लोग बोलते हैं कि सीए में 16-17 घंटे 18 घंटे बच्चे पढ़ते हैं, बट आई डोंट बिलीव समहाउ कैसे बच्चे पढ़ पाते हैं, क्योंकि अक्षत भी मैं देख रही थी, बिकॉज यू नीड्स आपको, क्योंकि मैं हमेशा मैं उसको बोलती थी या वो भी करता था, रात को आपको 6 मेरे ख्याल से 6 आवर्स की नींद जरूरी है, और दिन में भी अगर आपको एक घंटा तो मेरे ख्याल से सोना ही चाहिए टू लाइक फ्रेश योर माइंड. तो 7-8 आवर्स तो आपके नींद में जाते हैं. उसके बाद में लंच, डिनर, फ्रेशन अप, कुछ इवनिंग स्नैक, समटाइम्स यू शुड ब्रेक होता है, यू शुड गो फॉर अ वॉक और एनी अदर फिजिकल एक्टिविटी. तो आई डोंट थिंक सो कि आप, मुझे नहीं लगता 12-13-14 आवर्स से ज्यादा की पढ़ाई आप ले पाते हो. आई डोंट, मतलब मुझे बच्चे कैसे 16-17 आवर्स पढ़ते हैं, आई कांट बिलीव. मतलब अगर उसमें 17 आवर्स इफ दे आर मतलब 16-17 आवर्स, तो लाइक 8 घंटे में सोना, खाना पीना सारा सब कुछ, आई डोंट, मतलब कैसे होता है. तो फिर क्योंकि ऑलवेज उसको मैं बोलती थी कि ऑलवेज एक नींद आपकी पूरी होना बहुत जरूरी है. और रात को 12 बजे के बाद में आई डोंट थिंक सो अगर कोई बच्चा रात को पढ़ता है तो फिर वो सुबह लेट उठेगा. तो आप 12 बजे आप एक सही टाइम पे सो जाओ, सुबह आप 6:30, मतलब वो बोल के सोता था कि 6 बजे उठा देना, लेकिन हार्डली इट्स पॉसिबल. कभी उठ भी जाता था 6 बजे, कभी 7 बजे तक भी उठता था. मम्मा 10 मिनट बाद उठता हूँ, मम्मा आधे घंटे बाद उठता हूँ, 10 मिनट बाद उठाना. तो लाइक 12 से 6 या 7 बजे तक आप 6 आवर्स की नींद मुझे लगता है यू शुड हैव. और दिन में भी 1 घंटा सोना जरूर से बहुत जरूरी है अगर आपको रात तक वापस पढ़ना है. तो लाइक आई थिंक वो जो बोल रहा है ना कि वो एकदम सच बोल रहा है कि आई डोंट थिंक सो कि 12-13 या 14 आवर्स से ज्यादा आप पढ़ाई ले सकते. वो जैसा आप बोल रहे हो ना, वो जो एकदम बोल रहा है ना, मेरे ख्याल से एकदम सही बोल रहा है कि बूस्ट नहीं कर रहा है कि अरे मतलब जैसे बच्चे रैंक लाने के बाद में मतलब करने लग जाते हैं कि मैंने इतना पढ़ा या मैंने इतना किया या मेरा इतना रिवीजन हुआ या ये इतना इजी है, सीए तो इजी है. ऐसा कुछ नहीं है. सीए इज वेरी वेरी हार्ड. आई हैव सीन थ्रू, मतलब मैंने देखा है उसको. इतनी मोटी मोटी बुक्स, मतलब इसके फ्रेंड्स अभी पोस्ट कर रहे हैं सारी बुक्स के साथ फोटोज. इनकी हाइट से ऊंची बुक्स जा रही है. ये तो बोल रहे हो दे आर ऑलरेडी 5 लेवल, मतलब इनके फ्रेंड्स दे आर 6 की हाइट पे है. मतलब इनकी हाइट से आप जब बुक्स पाइल अप कर रहे हो तो 6 फुट से ऊंची बुक्स जा रही हैं. तो मतलब यू कैन सी हाउ हार्ड द कोर्स इज. तो
Definitely you have to work hard, have a self belief as Akshat says. So definitely you can crack CA final. और एक हर बच्चे का अपना गॉड गिफ्ट भगवान देता है. हर बच्चा मेहनत करता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक लक फैक्टर भी मुझे ऐसा लगता है चलता है. Wonderfully summed up, and it was great interacting with all of you, the family. Thank you so And, much. thank you, Ashok ji. So your Ashok ji, आप questions- कुछ कहना चाहेंगे? The questions you asked were all great, I can say, from my experience. And today being 18 July, I have completed 33 years of my CA degree. Congratulations. So I can say that कि जो आपने पूछा ना सारा क्रक्स निकाल दिया. हर कोई आपने पार्ट नहीं छोड़ा जो कि न्यू एस्पायरेंट के लिए जरूरी होंगे, किसी के लिए भी जरूरी होंगे. And I am very proud of having all of you here. Thanks a lot. और मेरे को जितने दीप्ति एक और बात कहना चाहूंगा, मेरे को बिकॉज मैं सीए रीजनल काउंसिल में भी था, जो लोग सीए लोग जानते हैं, जितने उसको कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिले होंगे ना, उससे मच मोर आई गॉट मोर देन 4000 सीएस दे हैव गिवन मी मैसेजेस और कॉल्ड मी. सो इससे बड़ी खुशी कुछ हो नहीं सकती. आपका ज्ञान स्टेशन परफेक्टली रिफ्लेक्ट्स योर यू नो द क्रक्स और योर इंग्रेडिएंट्स इन इट. सो थैंक्स अ लॉट. जय जिनेन्द्र. Thank you, sir. Thank you so much, Dipti. Thank you, Meenuji and Akshat. Have a wonderful, great future ahead. And we'll Thank you keep so much. calling you. Keep achieving great heights in your life. Our best wishes are there. And it's wonderful that you shared all your thoughts. And यही बोलूंगी, the lines which motivated me from the very first day when I joined my CA foundation examination. There was no CA background at that time, and our family society was also like that कि भाई लड़की को CA करवा रहे हो at that time, because we don't expect कि 5-6 years of course you will do just after 12th. Yeah. So एक कविता है जावेद अख्तर की, ये that जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो रास्ता है, रास्ता है तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो हौसला है, हौसला है तो विश्वास है कि फाइटर हमेशा जीतता है. These words, these were the real motivating lines for me, which I still read it today and which keeps me going. And Akshat's motivated line also, Dipti, I see now also, and that I also utilize. It says, never, never, never give up. Yes. Yes, sir. Never, never, never give up. Yes. Never give up on your dreams. Dreams are dreams because dreams को dreams ही इसीलिए बोलते हैं क्योंकि they are not the reality, and you have to work to make them reality. Yes. With these words, here I end this wonderful conversation which we had today morning. Thank you all for joining. Thank you once again. Thank you so Thank much, you. Dipti. Yeah. Thank you. Yeah. Jai And Jai. I hope this is going to be a very helpful for everyone. Every whether the person is doing CA or not, for every student, every person as an individual, this whatever thoughts we shared today and this forum is very helpful. So with this words, here we end our today's session. Today's interview, I can say. Yes. Okay. Yeah. Thank you all. Thank you. Thank you so much. Thank Yeah, you. thank you. Bye Jai bye. Jai. Thank you. Jai Jai. Jai Jai. Jai Hind. Yeah.